हिंदी में आप बताइए कि सीए का आपका जो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे हमें चाहिए। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो चालू हुआ आज, ये 2 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि अभी इतने जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग NFRA के बारे में सुना होगा, जो ऑडिटर्स पे काफ़ी सारा वो नियम लागू कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के साथ लड़ाई भी चल रहा है कि कौन स्टैंडर्ड्स इशू करेगा। तो ये जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं एक, और दूसरे साइड में ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, तो इससे हम अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को कैसे अपने में बदलाव लाना है ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ इस चेंज को फेस कर पाए और आगे भी इस देश की सेवा कर पाए। तो इसी विषय पे चर्चा हो रहा है और यहाँ पे टैक्स पे भी चर्चा होगा, GST पे भी चर्चा होगा। इसके अलावा प्रोफेशन को कैसे आगे ले जाना है रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बीच में, वो भी चर्चा होगा। तो आप लाइब्रेरी के माध्यम से अपने जो सीए हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ये लाइब्रेरी 1947 में फॉर्म हुआ था, जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी नहीं फॉर्म हुआ था। यही सारे अकाउंटेंट्स बाद में इंस्टीट्यूट के पहले मेंबर्स बने। तो लाइब्रेरी तब से जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे सारे बुक्स वगैरह ये सुविधाएं मिलते हैं। जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे आके कोई भी उनको जो किताब चाहिए उसका सुविधा ले पाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपना नॉलेज को अपग्रेड कर पाते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट्स लाइब्रेरी कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स भी करते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, तो कभी तो आके वो मिले, सोशलाइज भी करे। ये सारा चीज़, सारे एक्टिविटीज़ ही यहाँ पे होता है। AI थ्रेट सीए वर्किंग प्रोफेशनल्स का थ्रेट कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि AI थ्रेट नहीं है। आज देखिए, जब कंप्यूटर भी आने वाला था, लोगों ने सोचा कि उनका काम चला जाए, बट काम का जो नेचर है वो बदलता रहता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज से 50 साल पहले कोई एक घटना घटी तो उसका जो हिसाब है वो 1 दिन बाद या 10 दिन बाद होता था, बट यहाँ पे आज ऑनलाइन और सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, AI या जो कुछ भी है, उसके कारण आप देखेंगे कि तुरंत वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर वो ट्रांजैक्शन तुरंत रिकॉर्ड हो रहा है और बिना कोई गलती का, पीछे आपको पूरा क्लियरली ये पता चल रहा है कि क्या घट चुका है,
तो जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट हो सकता है। तो आज डिसीजन मेकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा लाइव है, जैसे आप शेयर मार्केट देखते हो लाइव, सारे डेटा आज टेक्नोलॉजी के कारण लाइव हो सकता है और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन बोलो। मैं देबायन पात्रो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का पास्ट चेयरमैन हूँ और अकाउंटेंट्स लाइब्रेरी का भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का जॉइंट चेयरमैन हूँ। थैंक यू सर। विजिटिंग कार्ड আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে নাকি আমি বলবো কিছু? আজকেরটা বলুন প্রোগ্রামটা। আজকে বলুন, আমার প্রেস রিলিজ দেওয়া আছে। আজকে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টস লাইব্রেরি 41st অ্যানুয়াল কনফারেন্স, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য 41st অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ অ্যাকাউন্টেন্টস লাইব্রেরি হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট মোস্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাজ পার দ্য চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ইজ কনসার্ন। It was formed 2 years before the institutes were formed. They were called the registered accountant. Thereafter they were converted to chartered accountant, and it was many of our past presidents have become the president of the institute itself. So this year our theme is accounting evolution, embracing changes with confidence. We have erudite speaker with us like Dr. Giri Sahuja, who is a tax guru, who is a national level speaker. আর আমাদের সঙ্গে আছে বিমল জৈন, উনিও জিএসটি, ইজ দ্য জিএসটি লেভেল স্পিকার, জিএসটি ন্যাশনাল লেভেল স্পিকার। তার সঙ্গে আমরা আরও দুজন স্পিকারকে পাচ্ছি, দোজ হু আর দ্য পাস্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট অফ আইসিআই। তারা হচ্ছে ডাক্তার সিএ দেবাশিস মিত্র আর ডাক্তার মিস্টার অনিকেত তালাটি। এই দুজনেই পাস্ট প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউট, অ্যান্ড দে হ্যাড বিন গ্রেসফুল এনাফ টু হ্যাভ দ্য সেশন ইন দ্য টু পার্ট। আমাদের দুদিনের প্রোগ্রাম চলছে, 17th and 18th। প্রতিদিনই 12 সিপিআর, 12 ঘন্টা, 6 ঘন্টা 6 ঘন্টা 12 ঘন্টার প্রোগ্রাম। এখানে অ্যারাউন্ড জানানোর বিষয়, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাকাউন্টেন্টস লাইব্রেরিতে 900 অ্যান্ড অ্যাবাভ ইজ আওয়ার রেজিস্ট্রেশন, ঠিক আছে? যেটা রেজিস্ট্রেশনটা হয়েছে তার জন্য আমি আমাদের কমিটি অফ মেম্বার্সদেরকে আই থ্যাংকস দেম অল। অলসো আমার দেবায়ন পাত্র, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য co-chairman of the entire conference committee, I also thanks him for doing the job excellently. We will enjoy this 2 days program and we'll meet others, your guests and everything. So I think you have got your anything. If you like to have any questions in your mind, you can go forward. No, এখানে অল ইন্ডিয়া রেজিস্ট্রেশন করছে। পিপুল ফ্রম ভুবনেশ্বর হ্যাজ কামিং, who are been speakers. Some of the speakers from south has also been joining. So it is national level. It is around 4 or 5, but it is all the CA ছাড়া আর কেউ না। তো ওখান থেকে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বাট সেটা কভার্ড হয়ে যাচ্ছে পুরোটাই ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে স্পিকার্স ও ন্যাশনাল লেভেল স্পিকার্স। আর এটাই আমাদের বলার আছে। আর যদি আপনাদের কিছু बाहर से कितने लोग आए सर? हाँ, बाहर से कितने लोग आए? बाहर से अराउंड 100 पीपल्स आ गए। ठीक है। और महाराज, वी आर वी आर थैंकफुल टू द महाराज जी, ड्यू टू हिज इल हेल्थ वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम लिटिल बिट लेट, but I requested Maharaj, and with the grace of God he could come to the program, and we have all heard him. He is also a chartered accountant, and he was last engaged with Ferguson company. After that he took up the monk, and he has been in different categories and different protocols in different companies. আপনাদের হিন্দিতে কেউ আছেন? है अच्छी सर, मैं हिंदी में ही हूँ। My name is Suman Chaudhary, currently the president of Accountants Library. This is Thank you. Thank you. Dear friends, good morning and namaskar to all of you. At the very outset, I sincerely apologize for delaying today's proceedings. I had some health problem in the morning, so I thought I would not come for this conference meeting today. But then I said, with so much of enthusiasm you have been organizing this for the last so many days, I didn't feel like letting you people down. After some extra medication, I'm on my feet once again. I don't know for how long this week will last. Anyway, I'll make an attempt and read out something today. Hope you will not mind it. It's a pleasure to be with you again this morning to
to be part of the inaugural program of the 41st Conference of the Accountants Library. Perhaps some of you among know that you were kind enough to call me earlier also to this conference in December 2018. In these intervening years, many things, the world has witnessed many happenings, most of them commonplace, some of them striking, and a few of them very, very painful. The most tragic among them being, of course, the COVID-19 pandemic. As we step into 2025, we're already being greeted both by natural and man-made disasters in different parts of the world, floods, earthquakes, volcanoes, cyclones, and terrorist attacks. We have seen floods in the desert of Rajasthan and the Gulf countries like Saudi Arabia and the UAE. We have seen snow in Odisha. As if all this repeat the challenges posed by the rising preference to cryptocurrencies, increasing cyber attacks, cyber crimes, including digital arrests, and the problems posed by what was referred to a little earlier, AI, artificial intelligence. But being a follower of Ramakrishna Vivekananda, I am absolutely confident that we have it in us to rise up to all these challenges. To quote Swami Vivekananda, if the mind is intensely eager, everything can be accomplished. We will be discussing today and tomorrow is accounting evolution, embracing change with confidence. A wonderful topic, all the best for that. I want to speak today mostly on the first of the four Purusharthas, that is Dharma. In passing, I will briefly touch upon the other three Purusharthas also. As most of you or all of you should know, our country has this wonderful tradition of the four Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha, handed down to us from many centuries. What is a Purushartha? It is that for which a human being strives. Purushena arthiyate iti Purushartha. To begin with, I will narrate to you a small story which occurs in the 5th chapter of the famous Brihadaranyaka Upanishad, a very old and ancient Upanishad. 4 classes of Prajapati's children, 3 classes of Prajapati's children approached him to be their guru, to admit him into the Gurukula for instruction and learning. Who were they? They were the gods, men, and demons. Devas, Manushyas, and Asuras. The tradition in Gurukula was you stay in the Guru's family as a brahmacharya for a prescribed period of time. It's just like today's residential colleges, residential universities. You stay for a prescribed period, study also, and do all the household chores in the Guru's family. And after completion of this, you approach the Guru for instruction, for final parting instructions. You learn throughout the stay there also, but ultimately, before parting, you ask for parting instructions. So first of all, these devas, the gods, finish their period of probation, their period of study and seva, and approached Prajapati. Please instruct us. And Prajapati gave them as instruction just a single syllable, da. Da, na, that third letter, da. That was the instruction he gave them. And he asked them, have you understood? He said, yes.
you asked us to practice Dama, control of the sense organs, and Prajapati was happy. Next, the Manushas, the men, came to Prajapati and said, please, sir, instruct us. Now, to these men also, Prajapati gave the same instruction. Duh. Have you understood? He said, yes, sir. We asked us to practice dana, charity, giving. And next, for the turn of the asuras, the demons, they to approach Prajapati and said, kind sir, please give us a parting instruction. Unsurprisingly, Prajapati gives these people also, these asuras also, the same instruction. The oldest study circle accountants library, Suman Chaudhary. Divine Patro and Manish doing a wonderful job as a chairman of this conference, trying to bring up so many important and relevant topics for the profession. Tushar, the convener, many past presidents of the dais, Ravi Patwa, my colleague in Central Council elect, Vishnu Tulsian, Vice Chairman. I can see many other seniors, ladies and gentlemen, a very, very good morning to all of you. The theme, accounting evolution, we all have seen, we all have experienced. We don't want to go back into a scene where we were using barter system of economy. That's how we started. When we started doing our articleship, we started with how we are going to pass journal entries. Each and everything that we were doing during our articleship, we were talking about, alright, if we are having tea, what is getting debited and what is getting credited. There were a lot of fun, there were a lot of jokes, but at the back of the mind, the fundamentals, the conventions was always there. The foundation was very, very strong. The principles and ethics were always there. The things which are changing today, when we talk about that change, which Devan has also, talked upon, is the methodologies, is the methods. The principles, the concepts, and the fundamentals were there and will be there and will always be there in the entire future. The evolution that we are talking about is an evolution of how we can do things differently, how we can create more efficiencies into the work which we are doing. That's how the whole process is all about, and it's time that we should embrace it rather than we should go behind or procrastinate on it. That this is not something which I am very comfortable with, this is not something which I don't think so is the right age for me, or this is not something which I cannot do. Gone are the times. We have to embrace it with open eyes and ears to see, experience and learn, all of us together, towards the growth of our profession, towards the growth of our country. And for that, three important things becomes very, very important. The first thing, adaptability. And that's where, there is a blockage of mindset to say, how can I adapt to this transformation? I've been used to, going over papers, doing auditing while, putting a tick mark on it. Now, all of us are telling us to work on a PDF file. I'll just give you a small example. Work remotely, work on a real-time environment. Clients are coming back to us and saying, well, we don't want you to work on hindsight. We want you to work on insight and foresight. We want you to work on a connected system in a collaborative environment. There are huge expectations because everyone is on the front. It's time to run. It's time to have complete transformation. And when we talk about run, many of us start thinking, well, we are 50 plus age, 60 plus age, 70 plus, how can we run at this age? Well, run in our profession means reskilling, upskilling, and acquiring new skills. And if we have to travel this long distance to achieve this speed of growth, the way the country is moving, the way the nation is moving, and the way the profession is moving,
And when the entire world is looking for us to be the accountant for them, to be the auditors for them, not just our Dear esteemed members and guests, I am delighted to welcome you to the 41st Annual Conference of the Accountants Library, a prestigious event that brings together professionals and thought leaders from across the nation. This year's theme, Accounting Evolution, Embracing Change with Confidence, captures the essence of our collective journey in adapting to ever-changing professional landscape. The theme is beautifully represented by a tree with deep roots and multiple branches. The root signifies our strong foundation in principles and values. For the inaugural session, his presence and words of wisdom will set an inspiring tone for the conference. Our conference features a remarkable lineup of national level speakers as Dr. C.A. Giri Sabujaji, Bimol Jain,